ऐसा विश्वगुरु भारत हमें तो कदे ही मान्य नहीं है। तो आप बोले ना कि ऑपोजिशन आपको सुझाव नहीं दे रहे, तो इस सूरज की ओर देखने वाली सरकार को 3 सुझाव दे रहे हैं हम। पहला तो है आपका जो एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है, जो एग्जिस्टिंग आपका लेजिस्लेशन है, उसमें जो भी प्रावधान है उसका सही सारे पोस्ट में आप फिल कीजिए जो वैकेंसीज है, और जो आप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लाए है उसका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन कीजिए। नंबर 2, व्हाट वी नीड मैम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड बट अ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच। आप एनवायरनमेंट को कॉन्करेंट लिस्ट में लाइए, जहां स्टेट लेजिस्लेचर्स भी उन पे लॉ बनाए और उसमें सुधार लाए। और नंबर 3, आप बॉटम अप अप्रोच लीजिए, टॉप डाउन अप्रोच नहीं लीजिए। आप युवाओं को प्रेरित कीजिए कि जो लोकल बॉडीज है, जो पंचायत है, जो म्यूनिसिपैलिटीज है, उधर से जो लोकल एरिया में काम करते हैं, उधर से आप क्लीन एयर की वाणी को पहले स्टार्ट कीजिए, फिर आप सूरज की ओर देखिए। हम तो भाई नीचे से देख रहे हैं। थैंक यू मैम। The next designated time is for the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. Your designated time is 2 minutes. With the permission of the Honorable Speaker, I would like to address the House. Viksit Bharat at 2047 is a national aspiration resting on the 4 pillars of Garib, Yuva, Nari and Annadata. Annadata or farmers not only provide us with the food we need to survive, but agriculture is one of the largest employers in India, employing almost 70% of India's total workforce. And we are committed to work for its benefit and welfare. Honorable Speaker Madam, let me bring to the notice of my friends from the opposition that the world looks up at India when it ranks among top 5 nations in the largest organic farming certified area. The world looks up at India when Tripura introduces hydroponic farming and increases agricultural production and reduces climate change effects. The world looks up at India when startups help 15,000 farmers use stubble to produce biofuels and generate electricity and bring down pollution. Our ministry is well aware of the fact that agriculture is both a contributor to and a victim of climate change, and both these aspects are being targeted by a single strategy, that is CSA. As India is the talent house of AI in the world, so our ministry is investing in climate smart agriculture that incorporates adapting to climate change while enhancing our food security and reducing greenhouse gas emissions through strategies like the National Soil Health Mission and the National Innovations for Climate Resilient Agriculture. Honorable Speaker Madam, while the opposition points out Denmark's agricultural sustainability, let us remember that India has come from facing food crisis in the 1960s to becoming one of the largest food exporters in the world today. I would like to conclude by requesting the opposition to be a part of the solution and not pollution. Thank you. Jai Hind. The next designated time is for the opposition member, Penubala Leshram. Your designated time